Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be learning the 7th chapter of Civics, Social Justice and the Marginalized Part 2. Here we will be learning about provisions in the Indian Constitution. The farmer of the Constitution knew that certain communities like SC, ST and OBC were discriminated against and were unable to progress due to various social ills, geographical remoteness, outdated agricultural system and lack of infrastructure facility. Constitution made provisions for them to ensure their advancement. अब यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों के लिए एक प्रोविज़न बनाया था. द पीपल दे वो गिविंग द ताकि इनको कोई राइट्स मिल सके जिसके लिए इन लोगों को लड़ना पड़ता था, जो इन लोगों ने सफ़र किया था इन द ओल्डन टाइम. सो नाउ सी व्हाट प्रोविजंस दे हैव बीन गिवन. द माइनॉरिटीज़ देखो SC, ST, OBC और जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना पॉपुलेशन में जो कम है उनको क्या प्रोविजंस दिए थे. आर्टिकल 15 ने इसमें क्या दिया था. दिस एंक्लोज मेक्स द स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और SCs और STs फॉर एडमिशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडेड और अनएडेड. यहाँ पर एजुकेशन के लिए इन लोगों को ये आर्टिकल में था कि इन लोगों को एडमिशन मिल सके ताकि दे कैन गो फॉर प्राइवेट स्कूल्स वेयर दे वर अवॉइडेड फर्स्ट, उनको पहले नहीं मिलता था. देन आर्टिकल 16 दिस क्लॉज अलाउज द स्टेट टू रिजर्व पोजिशन इन पब्लिक सर्विसेज फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द स्टेट दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक सर्विसेज. अब पब्लिक सर्विसेज में उनको जाना अलाउ नहीं था, तो इस आर्टिकल के थ्रू इन लोगों को ये चीज़ दी गई, इनको एक खास जगह दी गई कि इनको लेना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू टेक दीज पीपल फॉर द जॉब्स. आर्टिकल 4A में क्या था. दिस अलाउज द स्टेट टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन फॉर SCs एंड STs. यहाँ पर एक रिजर्वेशन पॉलिसी जो अपना की थी वो इन लोगों ने आर्टिकल 4A में किया था. एंड देन आर्टिकल 70 दिस एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल एबॉलिश करा जाए, ये वाली टर्म को यूज़ नहीं करना है. एंड दिस पीपल शुड बी नॉट ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एनी मोर. यह आर्टिकल 19(5) में क्या बताया. इट अलाउज द स्टेट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और द रेसिडेंस इन द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. यहाँ पर भी इन लोगों को फ्रीडम दिया जाएगा मूवमेंट, लाइक दे कैन टेक अ रेसिडेंस इन एनी एरिया ऑफ द कंट्री, वहाँ पर उनको रोक नहीं है. आर्टिकल 40 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन 1/3 सीट्स और इन पंचायत टू SC ST. यहाँ पर भी देखो पंचायत जो कमेटी होती है उसमें भी इन लोगों को 1/3 सीट्स दी जाएगी. आर्टिकल 46 एनजॉन्स द स्टेट्स टू प्रमोट विद केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस स्पेशली SC एंड ST. आर्टिकल 275 अलाउज स्पेशल ग्रांट इन एड्स टू स्टेट फॉर ट्राइबल वेलफेयर. 330 and 332 allows reservation of seats to ST, ST in parliament as well as in state legislature. यहाँ पर इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर. आर्टिकल 335 allows the relaxation to qualify marks for admission in education institution or promotions for STs and STs. यहाँ पर इन लोगों को एडमिशन के लिए लाइक दे कैन क्वालिफाई, उन लोगों की जो परसेंटेज है उनको हाई फाई परसेंटेज की डिमांड नहीं है. दे कैन क्वालिफाई फॉर एनी एग्जाम एंड दे कैन गेट द एडमिशन in the education institutions also. Provisions related to social justice. अब इन लोगों के लिए social justice का कैसे provisions हुआ. Safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. अब यहाँ पर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाया नहीं जाएगा. दे आर अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजन एंड कल्चर, यू कांट स्टॉप देम टू डू दैट. ये वाला चीज़ था. कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स द राइट ऑफ द माइनॉरिटी बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस. अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लॉ पास है ही, फंडामेंटल राइट्स है ही कि एवरीवन शुड गेट इक्वालिटी, तो वो उनको सेफगार्ड करना ही होगा कि दीज पीपल ऑल्सो गेट द इक्वालिटी इन एवरीथिंग. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBCs or other marginalized groups can rely upon the constitution to address their concerns. The government has made an effort to promote policies, give opportunity to specific groups. Some of the schemes implemented by the government. अब ये वाली schemes इन लोगों के लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू. Government provides free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facilities that may be available to in their localities. अब यहाँ पर hostel facilities दी गई थी दलित्स और आदिवासीज के लिए ताकि इन लोगों को कोई भी मना नहीं कर सकता for the education. They can take the admission in the hostel and they can study whatever they want to study like. The government has made concrete policies for benefit of marginalized. One such law policy is reservation policy that is highly significant. Here they are specified specific laws that
guard the marginalized communities against the discrimination and exploitation. The Prevention of Atrocities Act 1989 was framed to respond to the demand made by Dalits and others to the government against the ill treatment and humiliation faced by them. This law grants better protection measures for the Dalit. अब इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, जस्टिस नहीं थी, वो उसके लिए they can fight and they have the full right to get that. And this Prevention Atrocities Act ने ये वाला जो फ्रेम किया था कि इनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा या इनको कोई भी इनके गलत ट्रीटमेंट के साथ नहीं होगा. Now social justice, see, the Asian Center of Human Rights has urged to Delhi police to invoke Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention Atrocities Act 1989 against the murderers of Nido Tanian, a student from Arunachal Pradesh who was murdered near Lajpat Nagar market in Delhi on 30th January 2014. Taniam was alleged beaten with sticks and rods by a group of 7 to 8 men and the Delhi police failed to protect him despite being present on the spot. देखो ये दलित था, पुलिस ने उसको मदद नहीं करी even though he was there and he was beaten up to death. And there have been increased racial attacks on the people from the northeast India and Delhi. Addition to provision of Indian Penal Code, Delhi police must invoke the Scheduled Caste Scheduled Tribes Prevention Atrocities. अब ये इन लोगों को मानना पड़ेगा जो द एट्रोसिटीज़ उनको वो एक्ट पास करा है, उन्होंने फॉलो नहीं किया पुलिस ने. दे हैव टू प्रोटेक्ट, एवरी वन शुड बी प्रोटेक्टेड ना, ये तो फंडामेंटल राइट है दैट दे शुड बी प्रोटेक्टेड. सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर interlinked. People are generally marginalized due to their low social status, lack of access to education, different tradition, culture and dressing स्टाइल. अब यहाँ पर पढ़ाई की वजह से ही तो हो रहा है. अगर आप उनको पढ़ने ही नहीं दोगे तो उनका अपने आप ही व्हेन द एजुकेटेड पर्सन उसका ड्रेसिंग स्टाइल एवरीथिंग विल चेंज ना. एंड इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, लेट हिम फॉलो दैट. व्हाई यू कैन स्टॉप एनीवन टू फॉलो दैट. इट्स इन आवर फंडामेंटल राइट्स, इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज पास दिस. तो ये आप उसको नहीं करवा सकते. नेक्स्ट. Now, marginalized minority groups are looked upon with suspicion and therefore perhaps find it difficult to rent houses. अब यहाँ पर इन लोगों को जो कोई भी घर क्यों नहीं देता रेंट पे, क्योंकि इनको सस्पिशियस है, पता नहीं ये लोग कोई चोरी चकारी नहीं कर लें, these people will rob us or they are not the good people. ये जो mentality the people are having, for that they are avoided to keep them. जैसे उसी की वजह से वो लोग employment भी नहीं देते and even send their children to school. They lead to the economic inequality or marginalization. Though reservations were made in several fields to uplift the disadvantaged classes, it was not adequate for the social and economic emancipation. Now, reason for the inequality success was that majority of the people belonged to the scheduled caste lived in rural areas. They did not have much control over the land, which is the basic requisite for wealth in their areas. Due to the zamindari system, the landless scheduled castes and tribes did not have the opportunity to rise socially or economically. यहाँ पर जो जमींदार थे, naturally they were from the higher caste and they were not allowing them to come up, and that is why these people were not having any land, they were not having any house, nothing they were having. That is why they were suffering a lot economically. The different forest policies that were introduced further forced these oppressed groups to give up their traditional livelihood and compelled them to migrate and live the life of manual workers. In most cases, the government made no provisions for the rehabilitation of the tribal whose land were taken. This further increased the social and economic gap between the majority and the minority group communities. अब इनमें जो गैप क्यों हुआ, इन लोगों को अपने जो गांव छोड़ के शहर की तरफ आना पड़ा फॉर जॉब्स. अब यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर भी दे वर वर्किंग इन द लोअर टाइप ऑफ जॉब्स, तो इसलिए इन लोगों को दे कुडंट कम अप इकोनॉमिकली, वो बैकवर्ड ही रहे and they were not comparing to the majority people. So reservations and quota system in India. Now what is reservation? Reservation is the process of setting aside a certain percentage of seats in government institution for marginalized. It can be defined as a platform created to certain underprivileged sections of the society to help. अब ये जो reservation policy जो थी वो इसलिए थी ताकि इन लोगों को बढ़ावा मिले, ताकि इन लोगों को seats मिले, government jobs मिले, इनको education मिले. For that they were given the reservations. And this history of reservation can be traced to colonial period. Present reservation system is widely debated about the inception. But reservation is provided to women,
फिजिकली चैलेंज, SC, STs एंड OBCs। यही जो थे, इनको सारों को जो पहले कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, सो नाउ दीज पीपल आर गिवन द इंपॉर्टेंस एंड दे आर गिविंग द रिजर्वेशन, दे आर गिविंग द सीट्स। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन वॉज implemented for SC, STs, OBCs after the enforcement of the Constitution of India. In 1991, after the Mandal Commission findings, 27% reservation, 27% रिजर्वेशन जो दिया गया was provided to the OBCs को दिया गया था। In 1995, 3% reservation in employment was allocated to other weaker sections, फिजिकली डिजेबल्ड जो होते हैं, लाइक जैसे कि किसी के हाथ नहीं है, लाइक यू आर नॉट यू आर ब्लाइंड, डेफ, डम, ऐसे इन लोगों के लिए 3% था। द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिजर्वेशन प्लेसेस इन एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज कुड नॉट बेनिफिट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स is expected. For example, in Andhra Pradesh, the tribal literacy rate is only 11% against an all India rate of 29%. देखो कितना difference है। Only a small number of Adivasis are able to finish their schooling. उनको स्कूल जाना ही जा ही नहीं सकते। They are not having that thing to go. They are not allowed to go actually. And as such, only a few people were able to use the reservation quotas in higher education or the civil services. The overall effects therefore are probably limited and certainly hard to judge. Now here they are given the reservation C percentage. Scheduled caste को 15% reservation, scheduled tribes are getting 7.5, other backward class are getting 27, and total constitutional reservation, general reservation including ST, ST and OBCs का कितना है 49.5 and 50.5%. Now this is what is about the marginalization. You have to read the chapter carefully and understand it. Thank you.